Diabetes, how to detect it early. So I can tell you briefly that diabetes, unfortunately or fortunately, is an asymptomatic disease. तकलीफ नहीं कराती है, वो तकलीफ बाद में कराती है. इसलिए जब भी डायबिटीज होती है, early detect करें तो तकलीफ आपको ना हो. इसलिए it's very important that the only way to diagnose diabetes is by doing blood testing, by doing fastings and drinking 75 grams of glucose with 200 ml of water and doing 2 hours of glucose and doing an HbA1c, which is slightly expensive test and it's available across the India. So doing fasting glucose, 2 hours after glucose and HbA1c test is the best way of doing it. If you have a little less risk, you can get away with just doing a fasting glucose. If you have more risk, which unfortunately we all Indians have very high risk of diabetes, even at the age starting from 25. So everybody should get the blood test done. Urine testing is not the standard, and that's what it is. तो शुगर चेक कराना, फास्टिंग सुबह उठ करके ग्लूकोज के 2 घंटे बाद, और एक HbA1c टेस्ट कराना जरूरी है. उस बेसिस पे डायबिटीज डायग्नोस होती है. अगर आपका शुगर 126 से या 126 से ज्यादा है, और या 2 घंटे बाद 200 से या 200 से ज्यादा है, या HbA1c इज मोर देन 6.5, तो हमें उन्हें डायबिटीज बोलते हैं. और उसका तरीका ही है कि पहले आप ब्लड टेस्ट कराएं, और तभी अर्ली डिटेक्ट होते हैं. मोस्ट इंडियंस अबव 30 who have little extra money of spending a couple of ₹100 for their health should do on their own. Those who can't afford, we can't screen whole nation with this testing. We wish we had enough, but those people should do their testing early, and most Indians should do it. Thank you. So, Alok Gupta, your question is about how to detect diabetes. So, how to detect diabetes is by doing a blood testing, by doing a fasting glucose, drinking glucose 75 grams and testing 2 hours after glucose. And along with it, you can do an HbA1c, which can be done random testing. So, it's very important to, after 8 hours fasting, you do check your fasting glucose, 2 hours after drinking 75 grams of glucose and doing an HbA1c. That's the way we detect the diabetes. And the diabetes should be tested as early as possible in your life. If you have family history of obesity, not walking enough, and if you have certain symptoms like weight loss or weakness, you should test your blood test as early as possible, and right at the age of 25 if you have obesity. Because most Indians or most South Asians have risk of diabetes. So sugar check karana, कोई सिम्टम नहीं होते हैं. इस एसिम्टोमेटिक डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर टेस्ट डन अर्ली, और जितना जल्दी टेस्ट कराएं. और बस शुगर टेस्ट करानी है सुबह उठ करके 8 आवर्स फास्टिंग के बाद, 2 घंटे बाद ग्लूकोज पीने के बाद. मोस्ट लैब्स नो कि कैसे करना है. और HbA1c टेस्ट जो कि रैंडमली की जा सकती है. अगर आपको इतना समय नहीं है, केवल अपना फास्टिंग ग्लूकोज भी टेस्ट करा सकते हैं, या रैंडम HbA1c भी करा सकते हैं. अगर आपकी फास्टिंग शुगर मोर देन 126 है, and after meals is more than 200, and HbA1c is more than 6.5, then you have diabetes. If you have little less in the borderline, we call it pre-diabetes, and fasting glucose less than 100, and after meals less than 150, we don't call it diabetes. Type 2 diabetes can be cured is a tough question. बट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वजन 80 किलो है और आप 60 किलो कर लेते हैं और फेयरली यंग एज इन 30s and 40s में हैं, तब आप अपने डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं. एक बात मैं आपको बता दूं डायबिटीज के बारे में, कि डायबिटीज पैनक्रियास एक इंसुलिन बनाती है, और इंसुलिन बना करके ग्लूकोज को ब्लड सिस्टम से आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेट कराती है. जो ब्लड शुगर बढ़ा रहता है तो इंसुलिन की जरूरत होती है ताकि उसको अंदर में ट्रांसपोर्ट कर पाए. सो प्रॉब्लम व्हाट हैपेंस, प्रॉब्लम्स एट व्हाट हैपेंस दैट आपका जब तक डायबिटीज होती है 50% ऑफ पैनक्रियास ऑलरेडी नॉट वर्किंग. तो अगर 45 इयर्स में डायबिटीज होती है तो मेरे 50% डायबिटीज में पैनक्रियास काम नहीं करते, इट्स नॉट वर्किंग. Now, if I try to reverse it, I'll have to lose large amount of body weight to make sure मेरे 50% pancreas काम करे, because pancreatic insulin secretion बहुत difficulty से बढ़ते हैं. जहां तक रिवर्सेबल है, हमारी एक स्टडी चल रही है जो कि हम लोग एक्सट्रीम लो कैलोरी डाइट लेकर के ओबीज लोगों को, फेयरली यंगर हैं, जिनको आपको हार्ट डिजीज नहीं है, कोई मॉर्बिड कंडीशन नहीं है, कोई मेजर इलनेस नहीं है और डायबिटीज बहुत ज्यादा नहीं है,
उनको 1 से 2 दवा की जस्ट जरूरत है तो उनको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साइंटिफिकली लोग क्लेम करते हैं डिफरेंट थेरेपी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलाज नहीं है। बिकॉज ये एसिम्प्टोमेटिक डिजीज है तो थोड़े लोग फंस जाते हैं बातों में कि ये दवा खा लें तो रिवर्स हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, कोई भी ट्रीटमेंट, डाइट एंड एक्सरसाइज फॉलो करें, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट लें या कोई भी ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट लें, अपना शुगर टेस्ट कराते रहें। रिवर्स हो सकती है अगर अपना वेट अगर आप प्री डायबिटीज में हैं तो 7% वेट लॉस, 7% वेट लॉस करें तो हो सकता है। अदरवाइज आपको सिग्निफिकेंट वेट लॉस कराना है। But large number of unfortunately diabetes who have gone beyond 4-5 years time can't be reversed. But very early stage, yes, possible, can attempt it with significant dietary and walk and exercise. How to avoid diabetes? I think this is the most wonderful question I like. Because, what amount of people, the diabetes that what we have among Indians in a working age group is going to be very high. And it's as high, the recent ICMR studies that something like in some like Chandigarh is around 30%, some like Jharkhand is 15%. We can prevent diabetes. Diabetes को रोकथाम की जा सकती है। एक सिंपल इक्वेशन है कि आप धरती पे चले और धरती का खाएं। मैं इसको 1 मिनट और एक्सप्लेन करूंगा आपको भूमिका जी, और जो कि बिकॉज वाइडर ऑडियंस को मिल पाए आपके, क्योंकि इसमें क्या है कि धरती, क्योंकि इतने मैसेजेस हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया, डॉक्टर्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवर्ट है वही सबसे स्टैंडर्ड है, जिसपे आप धरती पे चले, आप किसी समय चले, 30 मिनट चले, 2 बजे रात को चले, 2 बजे दिन में चले, कभी भी चले, इंपॉर्टेंट है। सो वॉक एनी टाइम ऑफ द डे, वॉक एनी टाइम ऑफ द नाइट, एज लॉन्ग एज यू वॉक। बस चलें। बोलते डॉक्टर साहब दौड़े, जरूर दौड़े अगर आप दौड़ सकते हैं। स्विमिंग करें, जरूर करें। जिम में जा करके ट्रेनिंग कराएं, ये कराएं, जरूर कराएं। लोग ज्वाइन कर जाते हैं, काम नहीं कर पाते, उसको एक्टिविटी डेली नहीं कर पाते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉक 30 मिनट्स अ डे, 150 मिनट्स वीक। जो मैं वर्ड 150 मिनट्स बोल रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट 150 मिनट साइंटिफिकली प्रूवन है। 7% वेट लॉस, अगर आपका वजन 100 किलोग्राम है, अगर आप 93 पर आते हैं तो सिग्निफिकेंटली आप प्रिवेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर 70 में है तो अराउंड 4-5 किलोग्राम कम कर सकते हैं। दूसरा बात कि धरती का खाएं, बहुत ही कंफ्यूजन है हमारे देश में खास करके, और मतलब हमारे देश में हमने एड्स के बारे में नॉलेज कर दी, हमने कॉन्डम्स का नॉलेज कर दी, लेकिन हमने ये नॉलेज स्प्रेड नहीं कर पाए। धरती का खाना, जो खाना धरती से उगे और आपके प्लेट में जाए वो खाना ठीक है। इसमें कहीं यू कांट गो रॉन्ग विद दिस, आई कैन टेल यू दैट। आप जो खाना, आप बोलिए डॉक्टर साहब मैंगोज, बनाना, चीकू, रूट्स, जो आलू, कैन यू ईट इट? ऑल इज फाइन, ऑल इज फाइन। जब जहां प्रोसेस करते हैं, जैसे रोटी को आपने प्रोसेस मैदा में किया, समोसा बनाया, चाहे आलू को फ्राई किया, समोसा बनाया, चाहे आपने बिस्किट्स खाई, कोई भी ब्रांडेड, अनब्रांडेड, नीली ब्रांडेड कोई भी बिस्किट्स आर नॉट गुड फॉर यू। व्हाट्स गुड फॉर यू? धरती का खाएं, धरती पे चले, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जितना खाएं। अब पॉइंट है कि आपके प्लेट में कितना है वो इंपॉर्टेंट है। क्या आप एक गुलाब जामुन नहीं खा सकते? जरूर खा सकते हैं। आसान के साथ रोटी, सब्जी, दाल खाएं, जितनी सब्जी खाएं। अगर आप वेजिटेरियन हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस हैं, इट इज अ वंडरफुल डाइट, एज लॉन्ग एज आप फ्राइड फूड ज्यादा ना खाएं, पनीर ज्यादा ना खाएं, लेकिन सब्जियां ज्यादा खाएं। क्या ज्यादा खाएं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जियां एंड फ्रूट्स इंक्लूडिंग मैंगो, बनाना, चीकू, आम, चीकू, बनाना, सब कुछ खाएं। कोई भी फल मीठा नहीं होता है। हर एक मैदा का प्रोडक्ट मीठा होता है। हर एक चीज जो कि आप फ्रिज में नहीं रखते हैं, जो बाहर रखते हैं, वो भुजिया हो या कुछ भी हो, जो नमकीन हो, जो खाना हो, उसमें सॉल्ट होता है, चाहे शुगर होता है, चाहे वो घी होता है, चाहे फ्राइड होता है। मैं बोलता हूं एंशिएंट डाइट फॉलो करें, सिंपल डाइट फॉलो करें। जो आपका, अगर इमेजिन करें आपका किचन जो है फार्म हाउस में है और बाहर से कुछ नहीं खरीद रहे, वो खाना फॉलो करें। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना हमारे लिए, आपके लिए, लेकिन मेजॉरिटी आप वीक में आप 21 डाइट्स खाते हैं, 7 into 3 meals a day. आप 1-2 meal you can go odd, but every meal becomes odd, every weekend becomes odd. That's not acceptable. We Indians cannot afford it. तो आप डायबिटीज को भूमिका जी या इंडिया अफोर्ड कर सकता है प्रिवेंट करने के लिए, अगर आपके स्थान, और इंडियंस को सोचना ही नहीं है फैमिली हिस्ट्री है या नहीं, बिकॉज वी ऑल इंडियंस आर एट रिस्क। हर एक को डायबिटीज इंडिया में हो सकती है, मान के चले। हम लोग, हमारी स्टडी है
जो कि लैंसेट में पब्लिश्ड है, एपिजेनेटिक्स इन टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें हमने बताया है कि इंडियंस को सर्टेन जेनेटिक सुपीरियर टू जेनेटिक्स एक्सचेंजेस होती है, एपिजेनेटिक चेंजेस, वो हमने पाया है कि दैट एक्सप्लेन्स 1/3 of extra risk. For the same body weight, for the same exercise, for the same family history, we Indians, South Asians have got 3 times more risk of having diabetes than a white population. We don't know why. We scientists are frustrated about it. We are trying to work on it. It's a very slow things what happen. What's proven? जो proven है, जो work करें, exercise करें, और जितना खाना कम खाएं, जितना सब्जियां ज्यादा खाएं, processed food को avoid करें, वही तरीका है भूमिका जी. So next question is from Amit Chakravarti ji. So my fasting is 169, PP is 225. I'm taking glyciphase, which is metformin. So metformin सबसे सस्ती दवा है, glyciphase 1. And my family at night morning, how can I stay good without medication? You know, अमित चक्रवर्ती जी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका BMI कितना है, बॉडी मास इंडेक्स है. अगर आपका BMI 19 से 23 के बीच में है, जो कि हमारे देश में, या मेरी मदर, आपकी मदर, उसको अंडरवेट बोलते हैं. तो सबसे बड़ी देश में प्रॉब्लम हो गई, जो वेट नॉर्मल हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिकली, वो सोसाइटी उसको दुबले पतले बीमार बोलते हैं. सो इफ यू गेट इनटू BMI 19 to 23 and your HbA1c is below 6.5 with diet of what I explained earlier, कि आप अगर 150 मिनट्स वॉक करें और डाइट को फॉलो करें, और अगर आप दवा को धीरे धीरे कम कर सकते हैं और HbA1c 6.5 के ऊपर नहीं जाती है, तो आपको दवा बंद किया जा सकता है. लेकिन मैं ग्लाइसिफेज, जिसके के मेटफॉर्मिन के हजारों ब्रांड है हमारे देश में, कोई भी ब्रांड, सब एक ही ब्रांड है, एज लॉन्ग एज इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी से अप्रूव्ड है, जो भी मेटफॉर्मिन खाता है, इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिकेशन इन डायबिटीज. आई कैन टेल यू, people think I'm taking medication, that's why I'm dependent on it. तो दवाओं की, चक्रवर्ती साहब, कोई भी डिपेंडेंस नहीं होती है. It's one of the safest, longest studied medication, one of the cheapest medication that under after government regulation. It is, I think, last 5-6 years, hardly 2 rupees it's happening. So आप इस दवा को ले सकते हैं, as long as sugar control is fine. अगर आपका HbA1c और आप weight loss significant, जो मैंने बोला 7% या 7% कम कर रहे हैं, तो आप दवा से निकल सकते हैं. So the next question from Mohammed Hanif साहब, is red wine good for type 2 diabetes? First thing, I think मैं हनीफ साहब, इसको मैं क्लियरली मैं इंग्लिश हिंदी में रिपीट करना चाहता हूँ. We doctors do not recommend alcohol. Full stop. Alcohol is addictive. Now, those people who are drinking alcohol can take in moderate to small quantity, because larger quantity is not diabetes. If somebody tells me that I can drink alcohol, I have diabetes, और मुझे और कुछ नहीं होगा, because आपको diabetes it can happen so many, liver है, pancreas है, because alcohol का असर heart पे होता है, blood pressure बढ़ता है, pancreas का inflammation होता है, और liver disease कराती है. हमारे देश में liver disease बहुत बढ़ गई है, because fatty liver plus alcohol intake बढ़ गया. तो इसलिए important है कि alcohol हम लोग recommend नहीं करते. Those who drink alcohol can drink alcohol. Number 2. Those who drink alcohol, small amount of wine or any form of alcohol, taken in around something around 12 to 15 units in a week, which is around 2 small wines, or for 2 days in a week, can be helpful. There are small studies that can help you, but we doctors would never recommend starting drinking wine or any alcohol to prevent diabetes. Simple, sasta ilaj, walk, a good diet, not alcohol. But if you drink alcohol, small, you're allowed. Next question from Prachi Sharma. Also, what is the symptoms of juvenile diabetes? So, Prachi ji, जो juvenile diabetes हम लोग आजकल उसको type 1 diabetes बोलते हैं. Type 1 diabetes something around India 3 to 5% है, variable data है, हमारे पूरे वर्ल्ड में होती है. ये डाइट या एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है. कुछ इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें वर्ल्ड में लार्ज स्टडीज हो रही हैं, और ये इसका सबसे बड़ा है कि बच्चे का ग्रोथ नहीं होना, पुअर ग्रोथ. दूसरा, वजन घटना, बच्चा अनवेल होना, ज्यादा यूरिन पास करना, बार बार कुछ कैंडिडा या कोई फंगल इन्फेक्शन होना. इससे आपको अर्ली डिटेक्ट हो सकते हैं. अगर आपको थोड़ा भी वेट लॉस हो रहा है, बच्चा खा पी नहीं रहा है, जस्ट अनली अनवेल है, वॉमिटिंग कर रहा है, तो ब्लड शुगर टेस्ट कराना एक पीडियाट्रिशियन का या किसी भी फिजिशियन का रिकमेंडेशन बहुत स्ट्रांग है. सिंपल यूरिन ग्लूकोज इस एज में कराना मैं रिकमेंड नहीं करता उसे, लेकिन यूरिन ग्लूकोज से अर्ली मालूम चल जाता है. लेकिन ब्लड टेस्टिंग, फिंगर टेस्टिंग करा लेना कोई बुरा आइडिया नहीं है. सो जुवेनाइल डायबिटीज या टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, बच्चों को होता है, जो कि डाइट एंड एक्सरसाइज रिलेटेड नहीं है, लाइफस्टाइल रिलेटेड नहीं है, जो कि टेस्ट कराएं अगर बच्चे का ग्रोथ ठीक नहीं हो पा रहा है.
श्रेया जी का क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू टेक फॉर हाइपोग्लाइसीमिया? So in English and Hindi I'll repeat. Hyperglycemia, hyper means high, hypo means low. Hyperglycemia means कि अगर शुगर आपकी बढ़ी हुई है और उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज. So hyper is a Roman word. So glycemia is glucose. So अगर आपके ट्रीटमेंट से या इंसुलिन ट्रीटमेंट से, जनरली 2-4 दवाएं होती है, बोलते हैं सल्फाइन यूरिया, लाइक ग्लिमिपराइड या ग्लिक्लोजाइड टाइप की दवा, या इंसुलिन आप ले रहे हैं, तो आपकी शुगर बिलो 90 या बिलो 80 हो सकती है. बिलो 50 बहुत डेंजरस हो सकती है. आपको जो तकलीफें होंगी, घबराहट होना, हाथों में ट्रेमर आना, भूख लगनी, कंसंट्रेशन पुअर हो जाना, चक्कर आने, कभी कभी फिट आ सकते हैं. तो अगर आपको कोई घबराहट होना, अगर आप इंसुलिन पे है या डायबिटीज ट्रीटमेंट पे, तो अपना ब्लड शुगर टेस्ट करते रहे. अगर आपकी ब्लड शुगर 80 या 70 आ रही है, आपको कुछ खाने की जरूरत है. अगर आपकी ब्लड शुगर 80 से नीचे है तो आप इमीडिएटली ग्लूकोज टैबलेट या ग्लूकोज ड्रिंक ले सकते हैं. अगर आपकी शुगर नहीं बढ़ रही है तो आपको हॉस्पिटल इमीडिएटली जाने की जरूरत होती है, बिकॉज हम लोग वेनस में ग्लूकोज देते हैं. तो बहुत जरूरी है कि अपना ग्लूकोज टेस्ट कराते रहें और टेस्ट करा करके देखते रहे. अगर लो शुगर हो रही है, घबराहट हो रही है, तो उसको सो एनी ट्रेमर, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग, श्रेया जी, इफ यू हैव देन दिस आर सिम्पटम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया. Elderly, long-standing diabetes, they may not get symptoms of it. They may just become silent, sit down on the sofa, will not react to it. So it's very important that if they are on regular insulin treatment, their sugar test be tested. We call it asymptomatic hypoglycemia. मतलब symptoms नहीं होते हैं, because their awareness goes low. So they should be tested regularly. So it is very common. It's a very good question, Shreya. It's very important. Those who are treated on insulin, on medications, they become generally unwell. If they are on aggressive treatment, sugars are variable. You don't have to wait for the symptoms. But those people getting very infrequent, जिनको बार बार नहीं होती है लो शुगर्स, उनको सिम्टम्स ज्यादा होते हैं. अनारुल हक, डॉक्टर, इज हनी गुड टू टेक फॉर डायबिटीज? मैं थोड़ा एक कमेंट करना चाहता हूं ऑल्टरनेट मेडिसिन में. हमारे देश में डायबिटीज हजारों साल से है. आयुर्वेदा में डिस्क्राइब्ड है 300-600 BC से. तो डायबिटीज हैज बीन डिस्क्राइब्ड. जब डायबिटीज डिटेक्ट होनी चालू हुई थी तब तक बहुत लेट होता. हमारा लॉन्गेविटी 30 साल थी. थैंकफुली, यू नो, टू द होल लास्ट 56 years of hard work of this nation, we're living around 65 years time. We should live 90 years, 100 years time. Our job, you know, as a doctors, as a government, that we should live longer. तो प्रॉब्लम है कि हमारे देश में जो पहली मौत होती थी 1950-60 में इन्फेक्शन से होती थी, कोई भी ऑल्टरनेटिव, द मेन लाइन एंशिएंट मेडिकेशन लास्ट 300, 400, 5 years, 1000 years, 2000 years has not evolved. It was there 600 BC. It just remains static there. We're taking as religious books saying that Ayurveda is most wonderful treatment. If I was a born physician at 600 BC sitting with Sujeet Jha, the great professor we Indians have produced, I would have been a happy guy. But he would have written several textbooks and different editions of those textbooks because scientific advancement nahi hui hai. It's not something, a religious textbook which can't be changed. But we have taken that as a religious textbook and think what's written at that time was right. I respect that. It was right, very scientific at that time. But now, 2017, we have methods of checking blood sugars, we have methods of understanding kidney function tests, we have methods of understanding heart disease. So it becomes slightly irrelevant. We have a lot of infectious disease, but somehow the alternative medications or the claim what we do in our country, especially in the last few years' time, that all these medications are wonderful things, are working, wonderful things, are nice because of all these medications. What is the treatment for tuberculosis in Ayurveda? What's the treatment for cholera in Ayurveda? What's the treatment of leishmaniasis, Kala-Azar in Ayurveda? There's no treatment designed. So ancient medicine had not worked in India. Swachh Bharat Abhiyan, hand washing, unfortunately we have to learn from the West. So what I'm saying that what ancient knowledge we tend to apply is not that scientific. It has to be retested, redesigned, reapproved, then get into scientific studies, then we believe in it. Going back to honey, Anurul Sahab, honey is sugar. Simple. Avoid it. If you love it, have one it. If you don't have diabetes, if you have diabetes, 5 ml honey is as much as sugar that you can think of. It's a sugary syrup. People think there's a lot of power in it, which is not scientifically proven, but 1 spoon fine. But please note down, it has as much sugar as much as 1 teaspoon of sugar. Mohammed, what is the best medication used in diabetes? So best medication I would say is still remains diet and exercise, weight loss. That's the best medication that we Indians can afford. So walk and exercise. अगर आपको दवा के
लाइव मीडिया में मेडिकेशन किसी को प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहता हूं. प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर आई गिव मेडिकेशन. बट मेटफॉर्मिन इज द बेस्ट मेडिकेशन दैट व्हाट वी हैव. सबसे सस्ती, सबसे पुरानी, सबसे अच्छी एंड द बेस्ट प्रूवन साइंटिफिक एविडेंस, बिकॉज आज 70 साल से हमारे पास ये दवा है. मेटफॉर्मिन मोस्ट पीपल स्लाइटली ओवरवेट टू ओबीज पीपल. आप अंडरवेट है तब नहीं, अगर टाइप 1 डायबिटीज तो नहीं, जुवेनाइल डायबिटीज तो नहीं, लेकिन जनरल स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल अबव 30 डायबिटीज, मेटफॉर्मिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस. सबसे सस्ती, सबसे पुरानी एंड सबसे प्रूवन है. Saral Bhagat, my 3 months average blood sugar 76. Should we be worried? I'm 23. I would repeat Saral Bhagat sahab, because it's good to repeat, but it's slightly worrying me. I'm a little worried about your 6 because you're a young 23. I don't know what's your body weight. Try to get your BMI, which you can calculate from any website. What's your BMI? Try to get your BMI 23, 7% weight loss. 150-minute exercise, but simple है. धरती पे चले, धरती का खाएं, more fruits, more vegetables, more walk, weight reduction. But yes, I would repeat, I would also do fasting and 75 gram glucose and 2 hours after that, and repeat HbA1c. Keep a track on it, and if you are overweight, see your physicians as early as possible. You have pre-diabetes, 5.8 to 6.5. And that's very important. We are doing what called eye health study, large prevention study in the country. We have screened around 6,000 people, and we have screened around 900 people on type 2 diabetes prevention study, which is one of the largest study called eye health study. And in that we are trying to prevent that what's happening to you at pre-diabetes, because we Indians have, Prof. Mohan have proven that pre-diabetes converts to diabetes very quickly among Indians, more than any other population. So you have to be really careful being 23. Samuel Mark Pinto, I have been advised to avoid all grain cereals, fruits, all starchy foods, only have high protein food. I only have one kidney, lost the other on to cancer. What do you advise on my diet? So I'll advise you to keep this question, because this is quite a specific question. So I'm sorry to hear about your cancer, young man. And in regards to this diet, I do not agree with this diet. This is not a proper advice from a professional dietitian. Because some of the dietitians are using, and different social media is using very odd diet to attract inverted comma customers. But one thing is there, somebody can question the cereal, because we started having wheats and cereals 30,000 years ago, and 3,000 years ago. Sorry, we never had cereals before. We had nuts and standard fruity diet, including milk and animal protein, and in some vegetable protein, very rarely. But I would not advise in such a high protein diet, because that can damage your kidney, especially one kidney. And make sure you meet a nephrologist, kidney specialist, or a physician, or a dietitian who's more professionally under doctor supervision. But this does not sound good to me, this diet. So you can happy to email me this question, because you have a cancer, make sure you don't have other kidney affected. And can go through NDTV, and I'll reply you on a personal note. So please reply question to NDTV, and I'll reply on that. So Neetu Kumar, hi. Getting blood test done every 3-6 months is a reliable test to keep a track. Also, can you please explain the daily walking regime? So I wish I can do 3 to 6 months of the whole Indians, because we all end, because detecting early is a prevention. Because if my blood sugar is 105, I'll be careful. अगर मुझे शुगर 105 हो रही है तो मैं केयरफुल हूँगा. तो मैं चाहता हूँ पूरा देश कराए, लेकिन कॉस्ट अटैच्ड है. हमारा देश अभी भी इतना अमीर नहीं हो चुका कि पूरे मैं ब्लैंकेट सोशल मीडिया पे आके बोलूँ कि हर एक नीतू जी सबको ब्लड टेस्ट 3 से 6 महीने होने चाहिए. अगर हाई रिस्क हैं और आपकी शुगर बॉर्डर लाइन पे नहीं है तो एनुअल टेस्ट इज गुड इनफ. बट अदरवाइज इफ यू हैव बॉर्डर लाइन, इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, अगर आपको हार्ट डिजीज है तो 6 मंथली इज गुड इनफ. अगर आपको डायबिटीज हो गई तो 3 मंथली गुड. बिकॉज ज्यादा टेस्टिंग हमें बैलेंस करना है लाइफ में, कि यू कैन नॉट जस्ट गो ऑन डूइंग टेस्टिंग एंड जस्ट स्पेंड लाइफ. सो मोर स्पेंड ऑन डाइट एंड एक्सरसाइज. डेली वॉकिंग रेजिम, नीतू जी, दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन. मैं आई पुट इन हिंदी एंड इंग्लिश अगेन. जब भी वॉक करे, दिन में करे, रात में करे, इमीडिएटली खाने के बाद ना करे, जब भी आपको समय मिले. बिकॉज वी मॉडर्न इंडियंस डोंट हैव टाइम, स्लीप लेट, वेक अप लेट, ऑफिस टाइम 10 to 12 hours a day. So walk any time of the day you feel comfortable walking. 30 minutes, 150 मिनट अ वीक. जितने स्पीड से हो, हायर द स्पीड बेटर इट इज. लेकिन इतना जरूर टेक कर ले अपने लाइफ में. और अगर आप 2 दिन ना करें कोई बात नहीं, लेकिन आप टोटल मिला करके डिफरेंट मीटर्स आर देयर, डिफरेंट डिवाइसेस आर देयर, सो यू कैन डू 10,000 स्टेप्स या 150 मिनट्स वॉक. Afreen Zahan, which fruits are good and safe to eat? Love this question.
I wanted somebody to ask this question. मैंने एक सवाल मैंने बोला था, शायद आप नहीं सुन पाए होंगे, maybe you have heard it. Any fruits and vegetables, जो खाना खेतों से प्लेट में है सब खाना अच्छा है. Some fruits have little more sugar, less sugar. What I'm saying that what should be avoided is maida-based products. So any fruit which is high fiber is good for us, which includes mango to chiku to banana. So it has been proven scientifically in Australian studies that even mango prevent diabetes. So mango tastes sugary, but it has got hardly 120 calories compared to 2 standard biscuits have 120 calories. One samosa will have 250 calories. तो हम लोग उस बात पे ध्यान नहीं देते हैं. हम लोग British RAS system से कि क्या ना खाएं डॉक्टर साहब, क्या ना खाएं. We are from that frame of mind. क्या खाएं? More fruits 5 a day बोलते हैं, which includes couple of fruits, vegetables, maybe onion, maybe palak. So एक fist size is 1 fruit equivalent. 1 apple, 1 bagan size this much, 1 bhindi of this equivalent size. So 5 fruit a day, 5 fruit and fiber a day. We Indians eat a lot of garlic, onions and all that. So ये भी fruits and fiber में आते हैं. तो जो खाना सब्जी या सब्जी के साथ होती है, आलू सब्जी नहीं है. आलू is like replacement of roti. So take the aloo out, all the green leafy vegetables, including onions, tomato, वगैरह सब दिया, green leafy vegetables. All fruits are good for you. Mixed fruits. If you take 2 mangoes, we are not recommending it. But all vegetables and all fruits, which is fine. If you're eating mangoes, if your blood sugar is high, you can have half a little mangoes. But anything, now, typical example, say orange. Look, orange juice prefer करते हैं, so से ज़्यादा है, because we have the best grinder in the world. We take whole orange, it has fiber in it. So take wholesome fruits, because what is important is the fiber content of the fruits. That's why I recommend wholesome fruit. You know, and the other thing is about Karela juice. So what happens, I take 2 Karela sabji and you take 2 Karela juice. You think you're having more green looking and you are much healthier. That's not right. If you take 2 Karela, this is the best grinder, and that is sabji form, because when you eat Karela, just a little odd taste. Those people are drinking it fine, because we don't know that if you throw the fiber out, it's useful or not. So take everything, including Karela, including anything with a wholesome, including the fiber. So the question to which fruits, all are safe, more sweet tasting, avoid it if you have very high sugars, but in general, non-diabetes or pre-diabetes, all fruits are good for you. Mind Jaswal is taking insulin, has some side effects, tablets or insulin, which is more. So mind, you know, obviously I'm not here to treat whole country by just looking at the questions. If your doctors recommended insulin, it is safest treatment in diabetes. Insulin has a couple of side effects. Insulin is not addictive. It is very important to treat if medications are failed after a couple of medications. Certain people require right from the 3 years juvenile type 1 diabetes discussing before. So certain medications like metformin, so the newer medications have come up, some of them are cheaper, some of them are expensive, can be used. If they are not working, if the diet and lifestyle is not working, we need to push you on insulin. If your doctors have recommended insulin, that is the best advice. Insulin is safe, it's not addictive. आपको ज़रूरत है तभी देते हैं. It's like a glass. You know, I'm not dependent on my glass. I'm require it. That's why I'm putting my glass on. So if you require insulin, you're not dependent. That's your requirement of the body, and doctors can advise about insulin. Now there are 2 side effects of insulin: hypoglycemia, which we discussed earlier, low sugars, and weight gain. Otherwise, prick, yes, troublesome, but we don't worry about it, because if sugar can cause different disease like heart disease, kidney disease, eye disease, different complications, little prick should not bother if your doctors have advised. Manisha Sharma, is rice better than wheat? Again, I like this question. We are a wonderful country with a different type of dietary pattern, and different dietary pattern evolve. I'm part of the country where rice is the main. I'm the rice eater. People from West eat more wheat. North Kashmir eat more rice. Rice and roti is no major difference. दोनों में कोई फर्क नहीं है. आपके प्लेट में क्या है? मैं एक एग्जांपल बताऊं कि मैंने रोटी खाई और साथ में एक पनीर मसाला खाया, चिकन बटर मसाला खाया, 2 गुलाब जामुन खाए, ऊपर से बटर डाल दिया. रोटी का कोई मायने नहीं है. मैंने राइस ली, स्मॉल क्वांटिटी विद पालक की सब्जी ली, ग्रीन वेजिटेबल्स आप ली, सैलड्स लिया एंड गुलाब जामुन खाया. दैट इज मच बेटर. तो आपके प्लेट में क्या है, व्हाट मैटर्स, नॉट व्हाट इज राइस एंड रोटी. बिकॉज हमारे देश में है कि राइस बंद कर दो, आलू बंद कर दो, चीकू बंद कर दो, बनाना बंद कर दो. ये गलत बात है.
एंशियंट टाइम्स से आई है। ये फाइबर का कॉन्सेप्ट है, हमें जाना जो खाना ना पचे, विच हैज मोर फाइबर कंटेंट, वी शुड ईट मोर। सो राइस एंड रोटी इज सिमिलर। सम ऑफ द ब्राउन राइस, जो भूरा राइस होता है, जो क्रूड होता है, थोड़ा टेस्ट में खराब लगता है, दैट्स मच बेटर। क्योंकि उसके साथ क्या खा रहे हैं। इफ आई एम अ राइस ईटर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इफ यू गिव मी राइस, आई हैव नो सब्जीज, आई हैव दाल। बट if you eat rice with a lot of sabjis and little dal, that's fine. So what you eat with rice is very important. Now roti, if you have just paneer masala or a chicken butter masala, there's no meaning of rice because you're neutralizing with high fat content, no fiber content. So sabjiyan saath mein kha rahe hain kisi plate ke sath, that's balanced, that is important. And that balanced diet will not change, I can tell you. Most scientific studies have shown what balanced diet, what we learned for the last 50 years, more or less we follow that, which should include little fat. It's not that we have never recommended zero fat, because a lot of things going on the social media that fat is good for you. We never said fat is bad for you. You can have 10 to 15% fat, but avoid saturated fat. जो तेल जम जाए इस टेम्परेचर में, सितंबर अक्टूबर जो थोड़ा कोल्ड होता है, उसमें वो ऑयल यूज ना करें। बट जो टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में है, that is oil is good, but otherwise we not saying no fat. Sangeeta Gazmer ji, is good to take sugar-free tablets instead of sugar. And there are wonderful last 6 questions really. The sugar was invented in last 300, 400, 500 years. So सिकंदर ने लड़ाई शुगर पी के नहीं की थी, चंगेज खान ने शुगर पी के लड़ाई नहीं की थी. So you don't need sugar in diet. I know, I get used to I drink coffee and used to drink coffee with sugar, fine. So we human beings have been brave enough, fought many battles without eating sugar. So sugar is a modified processed food. जो मैंने बोला खाना खेतों से प्लेट में आया, so sugar is a processed food. So अब अगर आप sugar ना ले चाय में, in Western countries, my babies were born in Western countries, and we never give sugar in the milk. Till we came back and my mother started adding sugar in the milk so what is that? That sugar is not be added right from birth. हमें sugar की जरूरत नहीं है, added sugar की जरूरत नहीं है. हर एक खाने में स्टार्च में शुगर होता है, मिल्क में शुगर होता है, रोटी में शुगर होता है. उसके लिए चीनी जो बोलते हैं, शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं है. इसलिए किसी खाने को किसी चीज में शुगर की जरूरत नहीं. एंजॉय कॉफी टी विदाउट शुगर. नाउ इफ यू हैव बीन इन्वर्टेड कॉमा एडिक्टेड शुगर, यू स्टार्ट लाइकिंग शुगर एंड यू शुगर क्यों बना करते हैं? बिकॉज मैंने अगर 3 चम्मच चीनी ले ली तो समथिंग 40-50 कैलोरीज आ गई. 40 कैलोरी कंज्यूम करने के लिए मुझे लगभग 15 मिनट वॉक करना पड़ेगा. वो सॉफ्ट कैलोरीज, मैंने इसको काउंट नहीं की. तो शुगर बड़े सॉफ्ट कैलोरीज है. अगर आप 3 कप चाय पीते हैं, कुछ खाने में खाते हैं, तो सब मिला के 100-150 कैलोरी बड़ी चीनी में आ जाती है. तो उसको कम करने के लिए, 150 कैलोरी कम करने के लिए, विच इज इक्वल टू 30 मिनट्स वॉक, सिंपल वॉक, इसलिए हम लोग शुगर मना करते हैं. तो और शुगर से इनहिबिटली शुगर भी बढ़ता है डायबिटीज में. सो वी से लुक नो शुगर. बट एज फार एज साइंटिफिक स्टडीज आर, शुगर फ्री विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, अप्रूव्ड ब्रांड आर सेफ. FDA has approved it. There's nothing much against it. I am not recommending that you start taking sugar free, but if you, instead of having sugar, it's better to have no sugar. But if you can't, it gradually wean off with half sugar free, and try to wean off completely. उसको बंद कर दे sugar free को, वो ज़्यादा बेहतर होगा. मैं recommend नहीं करता, लेकिन I'm nothing much against that. अगर आप overweight है और sugar content आपके life में ज़्यादा है तो. Does gluten have any role in blood sugars? If you have celiac disease and if you have gluten sensitivity, which has been diagnosed by a doctor, excuse me, not by a dietitian, because some of the dietitians are wrongly diagnosing gluten-free. Gluten-free has become a fad diet. I would strongly recommend not to diagnose you gluten-free. But if you have celiac disease and you have diabetes, it matters. If you do not have celiac disease or gluten allergy, then you should not avoid gluten. I know there are several recommendations on 1 million websites about gluten-free diet, but we scientifically don't recommend gluten-free diet if you don't have celiac disease. Another Haq, doctor, is diabetes type 1 possible for an adult? My brother was around 30 when he was. Yes. Unfortunately, there are 3 to 5, 13 to 15. Any age you can have type 1 diabetes. We call it LADA, late onset adult type diabetes. But yes, possible. This is slightly tricky diagnosis. If you are thin, lost lot of weight, अगर आपकी टैबलेट से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, आपकी बॉडी में कीटोन्स है, तो टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है. अनुराग साहब. मिस्टर सुनील जे रॉय, what are the indications of bariatric surgery in diabetes? So, I've got Dr. Chobi was in Facebook Live last couple of weeks ago, and he's spoken about it. You can look into the NDTV website to look into his opinion about bariatric surgery. So the bariatric surgery is usually indicated above 35 body mass index.
and if you have diabetes and comorbid conditions. Sometimes, and is scientific, assessed by doctors above 32.5 with comorbid conditions. But grossly, anything BMI 35, younger than 65, if you are not able to lose weight with diet, exercise, and certain medications, because there are certain diabetes medication which has come up, which not bring the sugar down, but also cause weight loss as well. And the large couple of medications that are expensive treatment can also be treated. If your diet and exercise has failed, medications have failed, if you're less than 60, 65, if your BMI is 35 plus, then you can think about bariatric surgery. Talk to physicians, talk to your bariatric surgeon. And in bariatric surgery, it's not that I'm talking from one of the private hospital, but it should be done by very specialized doctors who have got a large experience of doing it, whichever, either big government institutions or the private hospitals who have got large number of cases doing it. So indications are because bariatric surgery are doing different surgeries, and I strongly recommend to see Dr. Chaube's Facebook Live with NDTV. Pallavi Mishra, how does diabetes affect TB? Are those two related? What precautions needs to, it's a very intelligent crowd, very intelligent, I must congratulate that. So, there are studies coming from South. Dr. V. Vishwanathan's study from diabetes and TB are twin epidemics. So almost 1/3 of new-onset TB have diabetes. मैं उल्टा बोल रहा हूँ, लग रहा है उल्टे में, लेकिन यही सही बात है. 30 से 36% डायबिटीज जिनको पहली बार ट्यूबरकुलोसिस जिसमें डायग्नोस हुई, उनको डायबिटीज भी होती है. तो जिनको सिग्निफिकेंट वेट लॉस, इनका इनफैक्ट जिसको नीली डायबिटीज डायग्नोसिस को वेट लॉस है, कफ है, उनको चेस्ट एक्सरे कराना जरूरी है. दोनों कोरिलेटेड है. This is just recently been scientifically proven, and sometimes they go together. TB promotes diabetes, diabetes promotes TB, and sometimes at onset you can have both together. So you need to have tuberculosis, get your sugar test done. If you have diabetes, if you have a little high risk, you should get it. And some people have weight loss, cough, very unexplained weight loss, fairly young age, TB in the family, you should get chest X-ray done. Chest X-ray is such a simple test. So you should be, yes, you're right, Meghali, that, Pallavi, that your diabetes and TB are correlated. Meghali, Monali, what is the correct guidelines to identify good food based on the nutritional chart while on grocery shopping? It's a tough question in India. We don't have much standardization. So I'll divide grocery shopping in two different parts. Fruits and vegetables, rice and wheat, compared to processed packed food. So I tell you, when you're on the fruits and vegetables side, wheat, brown rice, high fiber roti, wheat, avoid maida, that's what it is. Traditional, आपके जो great grandfather लेते थे, that's what you should try to do it. When you shift to the bakery side, the biscuit side, including bread side, they're all maida-based products, and that should be avoided. Should be less. The more, the so-called brown bread, there's a little difference in that. It becomes so inexpensive. It's not easy for a bakery to produce so-called wheat bread. It's just so-called wheat bread. So any bread you have it, but have with more vegetables, more salads, that's very important. So the saturated fat you should be looking to, content of the saturated fat, and all biscuits have a fat content. You can't manufacture a single biscuit without a fat. All have less fiber content. So it's better to eat fruits and vegetables rather than biscuits. If you're having biscuits, less fat contents, less creamy, that will be my recommendation. Raji Lala, should we take desi ghee instead of refined vegetable oils? We are not saying no to ghee. So if you have 5-10 ml of ghee a day, saturated fat in form butter or ghee, okay. So we never said no to ghee. Somehow it came in 80s, 90s, 2000, we are saying no to ghee. We never say that no to ghee. So the recommendation is minor changed. The only thing we change is the egg. We say bad, but it's not that bad. So yes, ghee can have small quantity, but any oil which is not frozen, I'm not going to recommend any branded oil, but no oil, any oil which is liquid, जो अभी liquid state में है, वो आप ले सकते हैं राजी जी, और otherwise ghee in small quantity is allowed. It's not banned substance. Prachi, please reply. I mean, now in medicine, how safe and effective? I may be a little controversial on this. I can tell you it's my Dr. Sujeet Jha's opinion, nothing to do with NDTV. This has not been scientifically proven. This has not gone to clinical trials the way it should go. The medications comment that it's not been tried heavily, like any medications goes into the scientific manner, and that's my strong personal opinion.
and I would not recommend it. I don't recommend it to patients, but I can't stop the whole country taking it, buying it, advertised, approved by government, which I think it should be scientifically tested. And we're slightly moving away from the science in this country, and we should stick to the science, what we know. Whatever ancient certain stuff which is going for should be scientifically tested, proven, then come to the market. And it should come, not doctors like me, the doctors sitting in AIMS PGRs expert enough to understand, and they should have a panel committee and they should decide it. Because no strong evidence. Some people believe in it. I'm not saying to stop it, but I have strong views against using those. Anshu Srivastav, can diabetes be cured, and it is possible to stop medicines and go back to normal lifestyle once the sugars get normal? You know, I told you, Mr. Srivastav, that Anshu Srivastav, that medications are not addictive. It's like my glasses. I can't see, I put my glass on, I become addicted to glasses. It's my requirement. So when you take medication, so diet and exercise would not always work. So diet exercise hamesha kaam nahi karegi. You need to top up medications. If on medications your HbA1c, your sugar is normal, you require that much of medication. If your blood sugar is falling down, your doctor can reduce medication. Because sometimes we take medication burden. Most medications in the main scientific world, that what we prescribe has been scientifically proven that safe for your kidney, they're safe for different organs. There are certain side effects which proven. Your doctor can warn you. You should also learn about the internet about medication warning. But most medications are safe, because when you prescribe any diabetes medication, we think about your long-term safety. हम लोग शुगर को इलाज क्यों करते हैं? Because people die early, people have heart disease, people can have kidney conditions. So we don't want to give you medications which will damage your kidney, will damage your heart. So it's very important to take those medications. We prescribe medications which are safe. So Government of India has regulatory authorities which approve medication, make sure safety standards approved. That's why prescribe. I'm talking about the mainline allopathic medications have a strong, stringent way of assessing it, and we also follow US and European guidelines. So that's true, and they can be stopped if your sugar is falling. So the last questions, Ratnika Varsini, I had gestational diabetes. So what are the chances of being diabetes free post-delivery? I have delivered my baby some time back. It's a good time to end. We are doing gestational diabetes prevention study, and I'll talk about gestational diabetes. Gestational diabetes, diabetes in pregnancy, which happens in 24 to 28 weeks time. If you have family history of diabetes, if you have obese, not exercising, you have gestational diabetes, which makes your baby at risk, you at risk, delivery at risk, cesarean sections. But good that you deliver a nice baby. So what I'm saying that I'm talking about gestational diabetes prevention is very important to walk. Your mother, my grandmother used to walk during pregnancy. Okay, so most pregnant women should walk 30 minutes, 10 minutes, 3 times a day to prevent gestational diabetes. Now, half the people post-delivery within 10 years can develop into full diabetes. So you have high risk of diabetes, and one of the highest risk of diabetes. So it's very important to walk 30 minutes, 150 minutes a week, more fruits, more vegetables, keep checking your blood sugars. First 3 months, 6 monthly, then on a long-standing 6 monthly test, and keep in touch with your doctor and physician. So that was my last question with Ratnika. So the last piece of advice, on behalf of Doctors NDTV, and thank you Doctors NDTV, and thanks Parul for getting me on live, and thanks for the lovely audience and very intelligent questions. I'm not saying that. Wonderful scientific questions. It really flowed, and it flowed very well. So thank you very much. Just two messages dena chahta hu. Dharti pe chale, dharti ka. Just walk on earth. Don't have to join swimming, badminton. Please do it if you're doing it. Walk 30 minutes, 150 minutes a week, 5 fruits, 5 a day. All fruits and vegetables are fine. That would prevent diabetes in the country. So it's a very important message. Just prevent diabetes. That's what we can do. We country can't afford to treat the whole country diabetes. We can prevent diabetes. So thanks NDTV for this mission. Thank you.